Hello friends, welcome to our channel Study Circle Professional. As you know, हम setting up of business का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट स्पेशली फॉर यू. तो यहाँ पे जैसे आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिधर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4A. याद रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4A में क्या है, ऑप्शन है एनी वन यू कैन अटेंड. ठीक है ना. और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, टोटल 15 मार्क्स. लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा होगा. आज हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 4A. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. द क्वेश्चन नंबर 4A का पहला क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट that an entrepreneur desires to have over the business affects the choice of form of business organization. Very easy question, चैप्टर नंबर 1 से पूछा हुआ ये क्वेश्चन. लेट्स सी इसका आंसर आप कैसे लिखोगे. ये रहा बच्चों इसका आंसर. इसका आंसर ये रहा, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. So you have to write total this many points. The degree of control and management that an entrepreneur desires to have over business affects the choice of form of business organization. है ना. आप जो बिजनेस आपका डिग्री एंड कंट्रोल जितना आपको रखना है, इट अफेक्ट्स द चॉइस. ये आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगा. इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर कंप्लीटली फ्यूज्ड एंड देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर हैज कंप्लीट कंट्रोल. अगर आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए देन यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटर और यू कैन गो फॉर ओपीसी. इन पार्टनरशिप फर्म, management and control of business is jointly shared by partners and their specific rights, duties and responsibilities would be documented through incorporating various clauses in this regarding partnership deed. पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो उसमें सारे राइट्स सब कुछ कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड. In a company, however, there is divergence between ownership and management. Management and control of company business is entrusted to board and is generally elected representative of shareholders. कंपनी के केस में तो आपको कोई कंट्रोल मिलने वाला ही नहीं है. Thus, a person wishing to have complete and direct control of business prefers proprietary organization rather than partnership of company. If he is prepared to share it with others, he will choose partnership. But if the activities are large, professional managers are required to handle day-to-day affairs, and there is need for corporate structure and management, he will prefer company form of organization. And these are the points which you have to write. So again, very easy question, right? Again, this was a very easy question. Let's move forward to next question. Next question talks about what are the technological aspects that should be considered before choosing a business location outside India. What are the technological aspects that has to be considered? So this is from chapter number 11. Let's see इसका आंसर कैसे लिखना है आपको. Okay, you have to write this point. Technological aspects. Technological aspects में आ जाएगा intellectual property protection, create, maintain and extract IP at location or provision thereof from another location to nation with free entry and egress. Power, communication, telecom, availability, quality and cost issues like infrastructure, geography, time zone, political consideration, conditions, safety of investment, economic policy and stability of country. Culture and language have a critical bearing on strategy for globalization. Value systems and institutions are also becoming increasingly important from a long-term perspective in order to have support of stakeholders. Ultimately, any chosen business strategy has to be executed within the parameters of legal and regulatory compliances. At the same time, it is necessary to factor in global tax costs and plan to possible extent within the framework of law. That's it. ये आपको technological aspects को लेकर के points लिखने हैं. Next question is, state the method of calculating net own funds as per RBI definition for obtaining NBFC license. NBFC license obtain करने के लिए net own funds का definition as per RBI guidelines. This is from your last chapter, that is chapter number 13. तो इसको आप कैसे लिखोगे? RBI का as it is exact definition आपको यहाँ पे लिख देना है. Exact definition आपको लिखना है. Calculating net own funds as per RBI definition. Net own funds is equal to paid up equity share capital plus free reserves, balance and securities premium plus capital reserve representing surplus arising out of sale proceeds of assets not created by revaluation of assets. इसमें से हम subtract करेंगे accumulated losses, book value of intangible assets, investment in shares of other NBFCs and in shares debentures of subsidiaries and group companies in excess of 10% of own fund mentioned above. This is how you have to calculate net own funds as per RBI definition. Exact यही words आपको एग्जाम में लिख के आना है. Differentiate between partnership agreement and trust deed. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन.
एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड ट्रस्ट डीड। So this is again direct question from chapter number 7। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये मैंने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोला था ड्यूरिंग जब मैं ये चैप्टर सिखा रही थी तब। तो देखो क्या बोला है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट और ट्रस्ट डीड के ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पार्टनर्स एज मेंशन इन डीड रन द पार्टनरशिप फर्म, प्रोसीजर टू एडमिट अ पार्टनर इन फर्म इज मेंशन इन डीड। वैसे ही trustees are generally appointed or elected. Procedure to elect appoint trustees is set out in trust deed. Partnership deed can be between 2 or more persons. Maximum number of partners in a partnership firm can be 50 partners. 3 parties are involved with any deed of trust. Partnership deed में कितने trust deed में कितने लोग involved रहेंगे? 3 parties are involved. Trustor, trustee and a beneficiary. Trustor trustee है ना, beneficiary है ना। और यहाँ पे आपको डिफाइन कर देना है कि ट्रस्टर कौन है, ट्रस्टी कौन है एंड बेनिफिशियरी कौन है। द डीड में फिक्स द टर्म ऑफ पार्टनरशिप और फॉर अ स्पेसिफिक अंडरटेकिंग और में मेंशन द कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन। यहाँ पे आप ये भी फिक्स करोगे कि वेदर दिस इज पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म और पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर। यू हैव टू फिक्स दैट ट्रस्ट डीड कैन प्रोवाइड फॉर ट्रस्ट टू बी वाउंड अप विद सर्टेन नंबर ऑफ years। The deed states rights and duties of partners. Partners owe fiduciary duties towards each other based on loyalty, trust and confidence. वैसे ही the trust deed states the rights and duties of trustees as well as beneficiaries. Trustees have fiduciary duties to beneficiaries. Expectations of partner are more limited to financial success of business venture, more easily measured. Expectation of trustees can be highly difficult to satisfy beneficiaries with so many choices as to where to spend income. तो बस ये एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन जैसे आपके नोट्स में प्रोवाइड किया गया एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको लिखकर आ जाना है ना। एंड नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगेन दिस इज चैप्टर 7 क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे यू हैव टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली है ना। तो अगर मैं आपको मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बोलूँ तो ये भी हमने क्लास में पढ़ा है, जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग। तो ये आप देखोगे मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो ऐसा आपको लिखना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेक्यूलियर टू इंडिया। इसको सिर्फ इंडिया में ही होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। द लॉ दैट गवर्न्स HUF आर नॉट कोडिफाइड एंड आर रेड अलॉन्ग विद हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। Business of joint Hindu family is controlled under Hindu law instead of Partnership Act. Membership in this form of business or organization is acquired only by birth. अगर आपको member बनना है then you have to take birth in that family or by marriage to a male person who is already member of HUF. 2 or more families agree to live and work together, throw their resources and labor with joint stock and share profits and losses together. Then this family is known as composite family. बच्चों याद रखना, ये भी आप अगर यहाँ पे mention कर सकते हो। There are 2 schools of Hindu law. One is Daya Bhaga, which is prevalent in Bengal and Assam, and other is Mitaksha, prevalent in rest of the country. है ना। According to Mitaksha law, there is son's right by birth in the property of joint Hindu family. It means when a son is born in family, he acquires the interest in property jointly held by family. है ना। और किसको कर्ता बोलते, किसको मैनेजर बोलते, को पार्टनर बोलते, दिस ऑल्सो यू कैन राइट है ना। दिस एडिशनल पॉइंट यू कैन राइट, बट ये 3 मार्क्स का मीनिंग पूछा है तो मीनिंग तक ही हम उसको लिखे तो बेटर है। So guys, this was question number 4A जो हमने डिस्कस किया है ना। और अब हम जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लेबर लॉ को डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो बाय।